Hi friends, my name is Mohsin. In this session, we are going to learn difference between individual series, discrete series, and continuous series. These are the first step, I can say, basic things which will be there in BSc, BCom, and MCom and MBA as well. These are the basic things for learning stats. Okay, individual series, how we will define individual series. Let's see the first example here. Here what it will do, it will give individual data. Here it has mentioned roll number as well as the marks. Out of 25, roll number 1 has scored 15, roll number 2 has scored 24, roll number 3 has scored 18, roll number 4 has scored 11, and roll number 5 has scored 17. Okay, in individual series, individual data will be there. That's why we call this as individual series. Let's see the example 2. Here serial number and wage. Okay, A earn 480 wage, B earn 520 wage, C earn 750, D earn 680, E earn 1020. These are the individual data. Here we can individually define the data. That's why we call it as individual series. Okay, here let me repeat it once again. Individual series, individual data will be there. That's why we call this as individual series. So roll number 1 has scored 15 out of 25. Roll number 2 has scored 24. Roll number 3 has scored 18. Roll number 4 has scored 11, roll number 5 has scored 17. Here the individual data is there. Here if anyone asks you how much scored by roll number 2, you can clearly tell that 24. About roll number 4, 11. Here the data is individually there. Okay, the example 2, as usual, as I told you, A has earned a wage of 480, B has earned 520, C has earned 750, D has earned 680, and E has earned 1020. In individual series, N is equals to number of observation. Okay, let me try it in Hindi as well. यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअली डाटा देता है. यहाँ पे देख सकते हो आप, रोल नंबर 1 कितना मार्क्स स्कोर किया 15, किस में से, आउट ऑफ 25. रोल नंबर 2 कितने स्कोर किया है 24, 24. रोल नंबर 3 है स्कोर 18. रोल नंबर 4 कितने स्कोर किया 11. रोल नंबर 5 है स्कोर 17 या 17 कह सकते हैं. ओके, एंड लेट्स सी द एग्जांपल 2. यहाँ पे क्या दिया है, सीरियल नंबर और वेजेस. ए कितना वेज अर्न किया है 480, बी 520, सी 750, डी 680, ई 1020, 1020. ये इंडिविजुअल सीरीज है. इंडिविजुअल सीरीज में एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, और एल्स ऐसा भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5. इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, इंडिविजुअल डाटा रहेगा. Next, let's see discrete series. Here you can see in discrete series. Let's see the example first. Here it has mentioned marks and number of student. Here the marks will represent X and number of students will represent F. F is nothing but frequency. So N is nothing but sum of frequency. Here you can see 10 has scored by 12 student, 20 has scored by 10 student, 15 has scored by 9 student, 11 has scored by 14 student, 23 marks scored by 15 students. In individual series, individual data was there. Okay, but here in discrete series, some group of student has scored some exact marks. Okay, if I in my class here, you can see there are 60 students. Out of 60 students, 12 student has scored 10 marks. 10 student has scored 20 marks. Okay, once again let me show you. 12 student has scored 10 marks.
10 student has scored 20 marks, and 9 student has scored 15 marks, 14 student has scored 11 marks, 15 student has scored 23 marks. There are 60 students in the class. If I ask how many student has scored 20 marks, they will tell 10 students. Okay, here it will show clear cut. 15 marks scored by 9 student, 11 marks scored by 14 student, 23 marks scored by 15 student, and represent sum of frequency. Frequency can be students or anything. Okay, f is equals to, here you can write n, or else you can write f as well. Okay, here as per the formula I am writing it as n. N is equals to sum of frequency. Here you have to add this 12 plus 10 plus 9 plus 14 plus 15. The outcome would be 60 if you sum it. Okay, this is the example first. Let's see the example 2, number of children and number of families. Here there are 50 families are there. Okay, 3 children, number of families. 3 families, they don't have any child, and 20 families, they have only single child. 15 families have 2 child, 8 families have 3 child, 3 families have 4 child, 1 family has 5 child. This is how discrete series. Okay, it will give some exact. Here 3 families has none child. Okay, it will give some exact outcome, while in individual series it will give individual data. Okay, let me show you in Hindi, repeat it in Hindi as well. ओके, डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आप, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है. यहाँ पे सम एग्जैक्ट मार्क्स स्कोर बाय एग्जैक्ट स्टूडेंट के बारे में बताएगा. वो इंडिविजुअल सीरीज में एक एक इंडिविजुअल डाटा बताता है. डिस्क्रीट में सम एग्जैक्ट स्टूडेंट हैज स्कोर सम एग्जैक्ट मार्क्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा देगा और कितने मार्क्स स्कोर किए ये बताता है. इसमें डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, f रहेगा. इसको सम करने पर हमें n आएगा, n इज इक्वल टू 60. आप n भी लिख सकते हो और एल्स आप f भी लिख सकते हो. एज पर द फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पे n लिखना है. यहाँ पे 10 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 12. 20 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 10. 15 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 9. 11 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 14. 23 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 15. और टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट. 60 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 23 नंबर आए, और 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 11 नंबर आए, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 15 नंबर आए, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 20 नंबर आए, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 नंबर आए. ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज में. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल डाटा देगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो 12 स्टूडेंट को सम एग्जैक्ट मार्क्स बताएगा. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ फैमिलीज है. यहाँ पे कितने फैमिलीज है, टोटल 50 फैमिली है. 50 फैमिली में से 3 फैमिलीज ऐसे है जिसको कोई बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है बता रहा है. 20 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको एक बच्चा है, और 15 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको 2 बच्चे हैं. 8 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं. 3 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको 4 बच्चे हैं. 1 फैमिली ऐसे हैं जिनको 5 बच्चे हैं. और गाइस मैं ये आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक है आपको स्टार्ट सीखने के लिए. इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. अगर आप ये सीख गए, समझिए आप बीकॉम में हो तो आपको हेल्पफुल होगा. आप बीएससी में हो, बीएससी स्टैट्स में हेल्पफुल होगा आपको. इवन ये एमबीए में है, एमकॉम में है, इवन एमए इकोनॉमिक्स में भी है, एमए में भी. ओके, ये डिस्क्रीट सीरीज है. मैं अभी नेक्स्ट आपको कंटिन्यूस सीरीज बताता हूँ.
Here in continuous series you can see there are sub two series we can call exclusive series and inclusive series. Okay, here marks is nothing but your class interval. Ci you can call it as Ci, or else you can call class interval as. Class interval consists of two limits. This is the lower limit and this is the upper limit. Okay, here the upper limit is get converted into lower limit in next step. Here you can see upper limit is get converted into lower limit. Upper limit 30 is converted into lower limit. Upper limit 40 is getting converted into lower limit. Here this is called as class interval. Class interval consists of two limits, that is lower limit as well as the upper limit. In exclusive series, upper limit will get converted into lower limit. Upper limit will get converted into lower limit. Upper limit will get converted into lower limit. Okay, this is how it will work. Class interval consists of two limits, that is lower and upper. Upper will convert into lower. Upper will get converted into lower. That is called as exclusive series. Here you can see number of students is nothing but your frequency. Okay, how you will get the frequency? Sum of frequency. Frequency can be students or anything. Okay, here what we are doing, we are adding. Okay, we are adding these and we got 60. In our class there are 60 students. 12 student has score in between are from 0 to 10. But in individual series you can exactly tell who has scored how much marks. In discrete you can say some exact student, 10 student has scored some exact 20 or 15 exact marks. But here there is a limit, lower and upper limit. 12 student has scored from 0 to 10. 10 student has scored 10 to 20. Okay, it is in between 10 to 20, from 10 to 20. Okay, here 20 to 30 marks scored by 9 student. Okay, and 30 to 40 has scored by this many, and so on. And exclusive series, here you can see this is the marks. Marks is nothing but your class interval Ci. It consists of lower limit and upper limit. Here you can see upper limit is 9, but it did not got converted into upper limit. That's why we call it as exclusive series. Okay, continuous series consists of two limit, lower limit and upper limit. Sorry, continuous series is consist of two series, that is exclusive series and inclusive series. Here there will be class interval. Class interval consists of lower limit and upper limit. Okay, upper limit will be converted into lower limit is nothing but your exclusive series. In inclusive series, upper limit won't be converted into lower limit. That's why we call it as exclusive series. Continuous series consists of two limits, exclusive and inclusive. Okay, don't get confused. Okay, if the upper limit is get convert into lower, then we call it as a exclusive. If upper limit is not getting convert into lower, then we call it as exclusive series. Okay, let me do it in Hindi as well. कंटिन्यूस सीरीज में दो सब सीरीज बोल सकते हैं आप, कौन सा, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज. ये मार्क्स को क्या बोलेंगे आप, CI. CI का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कंसिस्ट ऑफ क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. अपर लिमिट आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, लोअर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज. ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट आपका लोअर में कन्वर्ट हो रहा है, अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज. वही इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, यहाँ पे CI बोल रहा हूँ. ओके, क्लास इंटरवल कंसिस्ट ऑफ दो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर. अपर लिमिट किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोअर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको
इंक्लूसिव सीरीज बोल रहे हैं। ओके, वही आपके देख सकते हो आप इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल डाटा था, डिस्क्रीट सीरीज में सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट डाटा था, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, आपको 12 स्टूडेंट ऐसे है जिसको 0 to 10 है, 10 to 20 वाले 10 स्टूडेंट है, इसी तरीके से सो ऑन डाटा। यहाँ पे आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके, यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, और जो अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो आपका इंक्लूसिव सीरीज है। ओके, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, आपका अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए स्टैट्स में, या मैं बोल सकता हूँ आपको स्टैट शुरू करने से पहले ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है स्टैट सीखने में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे के सेशन में आपको इस इन डिटेल इंडिविजुअल सीरीज के कपल ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और सो ऑन करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह करेंगे हमारे सेशंस में। और गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड।